Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. आज के इस वीडियो में हम लोग ड्राफ्टिंग प्लीडिंग वाली सीरीज में से एक्सरसाइज नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू ड्राफ्ट अ लीगल नोटिस. एंड दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज नोटिस भले ही दिखता बहुत सिंपल है बट उसके भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग अ सैम्पल नोटिस विद यू, लीगल नोटिस, एंड ऑल्सो विल बी गिविंग यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल बी. अगर आपने बाकी की वीडियोस मिस कर दिए हैं इस सीरीज से, देन आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू विजिट लीगल बी playlist and check out all the important videos. All these are very helpful in your exam preparation. If you are preparing for RBI examination, उसमें भी ड्राफ्टिंग आपको काफ़ी काम में आएगा. अदर देन दैट, इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और यू आर अ लॉ स्टूडेंट, देन डेफिनेटली ड्राफ्टिंग प्लीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ you. If you have any queries, you can reach out to us on hello@iexamby.com. You can also visit our website www.iexamby.com and call on this number 9205524028. Drafting and pleading exercise number 4, how to draft a legal notice. This is what we are going to discuss in this video today. And legal notice, in the sense, we need to understand this is something which takes place out of court. Okay, आउट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लीगल नोटिस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोगों को ये भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है. सो दिस शुड नॉट हैपन. ड्राफ्टिंग अ लीगल नोटिस इज अ फर्स्ट स्टेप. This takes place before you initiate any legal proceedings in court. Okay, it takes place before you initiate any legal proceedings in the court. That is, it takes place out of court. ये एक वार्निंग की तरह होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं. जो आप एक वार्निंग देना चाहते हैं ऑपोजिट पार्टी को, जो आपका क्लाइंट देता है थ्रू यू, दैट इज द एडवोकेट. ही इज गिविंग दैट वार्निंग through the advocate. That is what is important and you need to understand that. Okay, so you being an advocate, what kind of language has to be used. and कई बार ऐसा होता है कि नोटिस के लेवल पर ही मैटर्स सेटल हो जाते हैं. that also happens. Okay, so that you need to understand, and that's why notice is something which is very important, and the language, the contents that we are including is very important. So let us see the format first. We will get an idea if we just see the format first, and then we will see a sample as well. नोटिस में आपको हेडिंग ऐसे देनी होती है. जनरली ये एडवोकेट्स की जो नोटिस होती है, दैट इज ऑन द लेटर हेड. इन दैट देयर इज अ सेंटर heading that is known as notice. Reference number is there to the left side, whatever reference number, and that reference number will be less. Reference number will be as per the advocate's लेटर हेड नंबर जनरली, क्योंकि उनके लेटर हेड पर काफ़ी सारे नोटिस होते हैं इशू. सो दैट नंबर इज देयर एंड डेट इज मैंशनड. देन व्हाट इज द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ, वो तो जनरली लेटर हेड पर होता ही है. सब्जेक्ट लीगल नोटिस, एंड देन द मेन कंटेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टू, एंड देन द नेम ऑफ द पार्टी टू whom you are giving the notice. which party? the opposite party. बिकॉज नोटिस आप किसे दे रहे हैं? टू द ऑपोजिट पार्टी. सो उनका नाम, एड्रेस. इफ इट इज अ कंपनी, देन द Messers or whatever the name of company is there. If it is a partnership or anything private limited, that has to be mentioned along with address. Then, dear sir, madam, pursuant to instructions from and on behalf of my client. This is something which is compulsorily to be mentioned. Okay, that you are acting on instructions of your client. You have to mention all these important facts which have been told by that client to you, and give your क्लाइंट्स डिटेल्स ओवर ईयर. बिकॉज ऑपोजिट पार्टी का तो नाम मेंशन है वहाँ पर, बट जो पार्टी नोटिस भेज रही है आपके थ्रू, दैट इज योर क्लाइंट. उनके डिटेल्स आना तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. सो दैट यू हैव टू मेंशन ओवर ईयर. रेसिडेंट ऑफ, आई डू हियर बाय सर्व यू विद द फॉलोइंग लीगल नोटिस that for house number this. Now this is a house dispute over here situated at this place. You had agreed to sell it to me via an agreement of sale. एन अग्रीमेंट ऑफ सेल वॉज मैंशन. उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर मैंशन किए जाएंगे, डेट एंड एवरीथिंग. दैट द सेड अग्रीमेंट फॉर सेल वॉज एग्जीक्यूटेड बिटवीन मी एंड यू, द अदर पार्ट. मी, दिस पर्सन, अदर पार्ट इज द ऑपोजिट पार्टी. This is something, these are the basic details which you will have to give. Then coming to the
मेन पार्ट, नोटिस को बहुत ज़्यादा भी प्रोलॉन्ग नहीं करना होता है. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, दे पुट अ लॉट ऑफ मटीरियल इन द नोटिस एंड ट्राई टू मेक इट सो लेंदी, बट दिस शुड ऑल्सो नॉट बी डन. It should be to the point. But the main important points which will be creating some kind of pressure, we can say, ये एडवोकेसी के स्किल्स होते हैं कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं. दैट शुड बी मैंशनड इन योर नोटिस. मुद्दे की बात होनी बहुत ज़रूरी है, एक्स्ट्रा का कुछ भी नहीं ऐड करना है. दैट एज पर द क्लॉज ऑफ डैश ऑफ द सेड एग्रीमेंट ऑफ सेल, यानी कि जो भी आपका क्लॉज होगा, डीड ऑफ कन्वेयंस है, सो दैट यू हैव नॉट कंप्लीटेड विद इन दिस मच मंथ्स यू वर गोइंग टू इफेक्चुएट दैट. So I hereby give you notice, understand this. I am still ready and willing to complete the purchase subject to your performing your part of the said agreement. Means अभी भी अगर आप कंप्लीट करते हैं, दिस ट्रांजैक्शन कैन बी कंप्लीटेड, तो कोर्ट में जाना ना पड़े. ऐसा सिचुएशन आती है, इसलिए मैंने आपसे कहा था दैट दिस इज समथिंग विच टेक्स प्लेस आउट ऑफ कोर्ट. कई बार नोटिस से मैटर सुलझ भी जाते हैं. Okay, and I require you to complete the same, and if you fail to complete the same within these many days from the date hereof, I shall file a suit against you for specific performance of said agreement for sale with damages and costs. So a suit for specific performance will be filed. ये बहुत important part होता है notice का. You need to mention that if this is your condition, if that is still not fulfilled, what adverse step you will be taking, what kind of legal proceeding you will be initiating in the court, that has to be mentioned. This is inevitable part of a legal notice, remember that. So ये काफ़ी important होता है and इसको बहुत अच्छे से facts के साथ, important facts के साथ present करना होता है. Copy of this notice is kept in my office for record. The advocate will obviously mention that he is having a copy of this as well. So this is all on record. कई बार यहाँ पर expenses भी mention होते हैं. I will show you a sample of an actual notice now, so it will be more clear to you. And then नीचे advocate का नाम होता है. This is a sample notice, as you can see, to Messrs through this person. Now if it is a Messrs, then through the person who is representing that particular Messrs company. Address, city, name, mobile number. This is important. And then legal demand notice, you can give the heading like this: respected sir, under the instructions and authority given my client. ये common रहेगा. The client name is also Messrs over here. Registered proprietor firm है वो भी. Here what were the facts? It is relating to supplying goods and materials. Client had supplied goods and materials, but again he has not received the payment. That is around 29,205 rupees. So ये 29,205 rupees उसे पे नहीं किए गए थे. These were the client's facts in this particular notice. So ये mention करना बहुत ज़रूरी होता है, and it has been mentioned over here. And here in the end also it has been repeated. And generally notice में जो figures भी होते हैं तो उसको आपको बहुत अच्छे से highlight करना ज़रूरी है. Remember that. In the 8 days from the receipt of this notice, with an interest of 18% per annum, you have to return the amount. ये भी mention करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि interest तो आप लोगे ही. If you have given the money and that has not been returned for years together, this is the amount of interest. 18% जो भी average rate पकड़ना होता है वो पकड़ के आपको notice में ये भी mention करना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो वो client डरेगा कैसे, ये भी तो आपको समझना होगा. All these things you have to understand. So in this case it was applied from this particular date and you will be responsible for all the consequences. ये ultimatum आपको notice में देना होता है. And जो notice draft करने की fees होती है advocate, वो भी आपको claim करनी होती है. ये notice में generally ये point भी आता है. यहाँ पर जैसे 3,000 रुपीज़ नोटिस चार्जेस दिए गए हैं, कोई लोग 5,000 भी देते हैं, डिपेंड्स. सो ये भी मेंशन होता है. So whenever you draft a notice, keep all these important things in mind. अगर आपके कोई भी queries हैं, do write to us. And I have a question for all of you. Note down this question. आप एक imaginary आपका situation create करके भी notice बना सकते हैं. Draft a notice for recovery of money I have given over here. Facts are: name of client is Mr. Zakir, name of opposite party Mr. Zahid. Recovery of money of the amount of 3 lakh rupees has been mentioned over here. So this much amount he has to recover. Who? Mr. Zakir has to recover from Mr. Zahid. तो नोटिस किसके नाम से बनेगी? जाहिद के. लेकिन क्लाइंट कौन होगा? मिस्टर जाकिर. एडवोकेट का नाम आप अपना डाल दीजिएगा. Purpose, business or any other purpose you can mention over here. So let us
meet again with another video, another exercise relating to drafting. And if you have any queries, do write to us in the comment section of this video. Don't forget to subscribe to Legal Bee. Prepare 50% faster with us at iExamBee. Thank you everybody.